हर भारतीय नागरिक के लिए 26 नवंबर का दिन बेहद खास है, क्योंकि यही वो दिन है जब देश की संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को विधिवत रूप से अपनाया। 2015 से आज ही के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर और आप देख रहे हैं संविधान दिवस पर हमारी विशेष पेशकश। संविधान दिवस पर विशेष कार्यक्रम दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने के लिए कानून मंत्री की तारीफ की। उन्होंने संविधान निर्माताओं को याद किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संविधान हमारी उम्मीद और आजादी की सौगात है। Congratulations to brothers and sisters all over the globe on this Constitution Day. This is befitting occasion to remember with a sense of gratitude and reverence our founding fathers, who sagaciously gave us unique constitution that is spine to our democracy. I wouldn't reflect much has been said by the Honorable Minister and earlier speakers. Let us in togetherness reaffirm this day our allegiance to constitutional core values. And friends, this is a serious statement. Some of us are getting out of line on this. Over the years, Constitution has been a beacon of hope and freedom, except, and that was the darkest period, a period we would like to forget. Young students, boys and girls may not be aware of it. And that was proclamation of emergency by the then Prime Minister Indira Gandhi in June 1975. The darkest period in post-independent history of democratic India. Imposition of emergency was outrageous trampling of constitutional essence and spirit. It was no less than sacrilege of the Constitution, a document so dear now to 1.4 billion people. 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा आपातकाल लागू करना संविधान का बहुत बड़ा अपमान था, संविधान की आत्मा पर कुठाराघात था। Fortunately for us, our democratic values are so strengthened and so deep-rooted and embedded. Such a misadventure cannot even be thought of in present times. The Honorable Minister had indicated that it was in 2015 that the idea occurred to the Honorable Prime Minister to have 26 November as a Constitution Day. Exactly, it was on 11th October 2015, because the notification of which the Honorable Minister is too sure about it was on the date you indicated, 19th of November. But the declaration was made by the Honorable Prime Minister at Mumbai on October 11, 2015, and the occasion was he was laying the foundation stone of Dr. B.R. Ambedkar's Statue of Equality Memorial in Mumbai. इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अ गाइड टू अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और पर्सपेक्टिव ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेवलपमेंट नामक 2 पुस्तकों का भी विमोचन किया। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना सही मायने में संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि है। Article 370 was the only article of Indian Constitution that was not drafted by the drafting committee. All other articles were drafted. And Dr. Ambedkar declined to draft it. I would urge you to go through his communication on the point and look at how this Article 370, a temporary article
of the Constitution bled us, made the life of people of Jammu and Kashmir hellish. We are beholden to the wisdom of the Honorable Prime Minister Narendra Modi and sagacious approach of the Honorable Union Home Minister Shri Amit Shah. That article is no longer in our Constitution. In a sense, it is a tribute to Dr. Ambedkar that what he did not approve, that has been honored by the Indian Parliament with the vision of the Prime Minister. Second, my very dear friend Tushar Mehta ji made reference about the Sardar Vallabhbhai Patel ji, that he played a critical role in integration of princely states. Sardar played very critical role. 3 options were available to the princely states, but Sardar again was kept away from dealing with the state of Jammu and Kashmir. Sardar's success was 100%. History of this country would have been very different if Sardar had also been entrusted with the task of integration of the state of Jammu and Kashmir. The nation has paid a great price for it. Thankfully, we are back on the rails. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान दिवस हमें आत्ममंथन का मौका देता है कि हमारे संवैधानिक अंग कैसे काम कर रहे हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। संविधान दिवस की शुरुआत 2015 से की गई थी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। Constitution Day is a befitting occasion for us to reflect how our constitutional organs have performed. What is the state of the nation? It has been indicated by the Secretary in particular, the growth trajectory of this country. It is soothing to note that our growth trajectory is incremental for last about a decade and will continue to be so. Is a matter of satisfaction. Growth is impacting every walk of life and every segment of society. India's growth has been appreciated for one single reason. It is not pyramidical. It is plateau kind of development, which means everyone is getting benefit of it. If your metro Delhi has 5G connectivity, my village also has it. That's a great achievement. Friends, just a decade ago, and worrisomely, we were part of fragile 5 economies in the world. It was a cause of deep concern to everyone. And just in a decade, we have traversed to that level that we are the 5th largest global economy, an accomplishment of 2022. By 2030, as already indicated here, we will be 3rd largest global economy. But what is more significant for youngsters, for boys and girls, in the process we have overtaken the economies of UK, France, Germany, and Japan. What an achievement for us. I had the good fortune to be associated and to know the point of view of global leaders when we had G20, one of the most impeccable programs the world has ever seen. There were no fault lines. World Bank and IMF, 2 global premier financial institutions, which earlier had been indicating how difficult we are in economy. I was a union minister in 1990 when our gold in physical form had to be taken to Switzerland to sustain our financial credibility. Our foreign exchange then was between 1 billion and 2 billion. Now it is over 600 billion. So what they say about? They hail India's phenomenal rise, unprecedented growth, and financial inclusion. In
International Monetary Fund reckons India as a bright global spot of investment and opportunity. And according to the World Bank, our digitization model is worth emulation by other countries. Details have already been given, I will not bother you. Friends, look at our current contemporaneous scenario. Unprecedented intense infrastructural growth, deep penetration of technology, digitization, continual formalization of economy, transparent and accountable governance, zero accommodation for corruption. These are facets and new norms of governance. And the benefit is coming to the young boys and girls. They will get level playing field. India's phenomenal rise, sea, land, air, space, is a matter of global recognition. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, दुनिया भर में भारत की साख बढ़ रही है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। We are now futuristic in our approach because we are that part of the world now where the world looks at us. We are setter of agenda, no longer part of agenda. Voice of the Indian Prime Minister was never heard so loudly by the world as now. Respect for our passport was never that high as now. Friends, we like it or not, disruptive technologies, we'll have to live with them. They are our bedfellows. So we'll have to extract their positivity. The good part is that our country is amongst very few countries in the world who are addressing the issue with positivity. And that will be greatly helpful in getting our slot, as was indicated by the Honorable Minister when we attain centenary of our independence in 2047. Visionary leadership of the Prime Minister Narendra Modi has elevated our global status and reputation. And this I could feel in G20. Every world leader was so stunned and impressed. And why not? G20 footfall was in every state of the country, in every union territory. 60 locations and 200 interactions. They came to see India, entire India. Central government and state government contributed wholesomely. There were no fault lines. It was an amazing event. But look at the achievements. India's rise in global community of nations is very high because we could secure in G20 inclusion of African Union. European Union was already part of it. African Union. We could impact the world, emerge as a leader to voice the voice of Global South. We could create a great opportunity in commerce and economy by having that corridor. इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया। इस मौके पर उन्होंने बाबा साहब के योगदान का भी उल्लेख किया। 19 नवंबर 2015 को भारत सरकार के मंत्रालय से एक नोटिफिकेशन निकला कि अब से 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा और पूरे देश में मनाया जाएगा। ये बड़ा एक कदम उठाया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अडॉप्ट किया, तो उसका अगर हम हिसाब लगाएं तो 74 साल पूरे हो गए। 75वें वर्ष में प्रवेश करेंगे तो ये अमृत वर्ष भी कहलाता है। इसलिए भी आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। हमारे से पूर्व जितने भी स्पीकर बोले, उन्होंने जो भारत सरकार की योजनाएं उनका जिक्र किया। एक ही उद्देश्य है सारी योजनाओं को
कि हमें 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, ये सपना लेना है। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज पर हुई बहस और बाबा साहब अंबेडकर की भूमिका क्या रही उसके बारे में भी उन्होंने बताया। उस समय डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब खड़े होते हैं और वो कहते हैं मैं एक सुझाव आपको देता हूं, और उस सुझाव को सबने सुना, राष्ट्र ध्वज समिति में सबने सुना। उन्होंने कहा कि केसरिया, सफेद और ये हरा, ये 3 रंग झंडे में हैं, लेकिन बीच में कुछ होना चाहिए आप कहते हो। तो मेरे हिसाब से जो अशोक स्तंभ से जो धम्म चक्र है उसमें 24 तिलियों का एक चक्र है, उसको लेना चाहिए। तो कुछ ने आपत्ति की कि ये सारनाथ स्थित जो अशोक स्तंभ है उसमें धम्म चक्र की जो 24 तिलियां, ये क्यों ले हम? तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर खड़े हुए कि ध्वज को देख करके आदमी ध्वज को भी प्रणाम करता है और उससे गुण भी लेता है। जैसे आपने कहा सफेद देखेगा तो देखा शांति आनी चाहिए, हरा देखेगा तो प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए, केसरिया देखा तो वीरता आनी चाहिए, ऐसे गुण लेता है। तो मैं 24 जो ये तिलियां हैं उनके आपको गुण बताता हूं। जब उन्होंने सारे गुणों का वर्णन किया तब लोग चकित रह गए। ये लीगल बैकग्राउंड के लोगों की खासियत होती है, जैसे हमारे उपराष्ट्रपति जी की खासियत है। क्या कहा उन्होंने कि इस धम्म चक्र की 24 तिलियां 24 गुण दर्शाती है। कौन कौन से गुण? प्रेम, पराक्रम, धैर्य, शांति, दयालुता, अच्छाई, निष्ठा, सौम्यता, आत्मसंयम, निस्वार्थता, आत्म बलिदान, सच्चाई, नीति परायणता, न्याय, करुणा, शालीनता, नम्रता, समानुभूति, संवेदना, परम ज्ञान, परम बुद्धिमता, परम नैतिकता, सभी जीवों से प्रेम, प्रकृति की दयालुता में विश्वास, ये 24 गुण हैं, इसलिए उसको आप अपनाइए। फिर किसी ने कहा कि चरखा कहता है कि लगातार चलते रहो, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसी का उदाहरण देकर के कहा कि ये धम्म चक्र भी कहता है इसमें 24 तिलियां 24 गुण हैं और ये कहता है 24 घंटे ही चलते रहो। उसके बाद ये आपका जो राष्ट्र ध्वज है ये स्वीकार हो गया। ऐसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनके साथियों को हम आज याद करते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री ने संविधान सभा के मतदान के फैसले को लेकर कहा कि ये उन लोगों की दूरदर्शिता थी। महिलाओं को मताधिकार लेट मिला और इंग्लैंड में भी महिलाओं को मताधिकार 100 साल के संघर्ष के बाद मिला, वो भी 2 पार्ट में। पहले 40 साल से बड़ी उम्र की महिलाओं को मिला, पढ़ी लिखी महिलाओं को, फिर सारी महिलाओं को हम एक साथ कैसे दे दें? उन्होंने कहा अगर हमने महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया तो आधी आबादी के साथ न्याय नहीं होगा। जो संविधान की प्रस्तावना में हम न्याय लिख रहे हैं, तब उन्होंने कहा क्या करना चाहिए? तब उनका डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब का बहुत सुंदर भाषण है संविधान सभा में। उन्होंने कहा 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू। ये वैल्यू क्यों बोला? क्योंकि संविधान सभा की चर्चा में आया एक नगर सेठ है, उन्होंने कहा 22 करोड़ लोग हैं, कैसे मानेंगे? सबको अगर वोट का अधिकार नहीं होगा। बोले एक नगर सेठ है, वोट एक देगा 10,000 गिन लीजिए। एक राजा है, वोट एक देगा 20,000 गिन लीजिए। एक बड़ा राजा है, वोट एक देगा 50,000 गिन लीजिए। एक वकील है, वोट एक देगा 5,000 गिन लीजिए। तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो भैया, आप मताधिकार सबको बराबर दीजिए। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये होगा तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। इसलिए एक साथ जो मताधिकार का हमें अधिकार मिला वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के कारण मिला। संविधान सभा के सभी सदस्यों का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने एक चीज और कही कि आप इनको मताधिकार देकर के तो देखिए, जिस दिन मतदान होगा उस दिन महिलाएं भी, अनपढ़ लोग भी,
समझेंगे हमारे पास राइट है हमारा प्रतिनिधि सुनने का। तो जिस दिन मतदान होगा, जैसे लोग होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ऐसे मतदान दिवस का भी सेलिब्रेशन करेंगे। और आज जब हम देखते हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे एमपी का चुनाव हो, महिलाएं सज धज करके वोट देने आती है, तो हमें लगता है बाबा साहब अम्बेडकर की इच्छा पूरी हुई है, कितना बढ़िया मतदान का प्रयोग हो रहा है। ये जो कुछ काम किया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, इसलिए संविधान दिवस के अवसर पर जितने भी समितियों के अध्यक्ष थे, जितने भी समितियों के मेंबर थे, जितने भी संविधान सभा में सदस्य थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, विशेष रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मैं शत शत प्रणाम करके। इससे पहले संविधान दिवस पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित विशेष समारोह में 5 तकनीकी सत्रों वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रवर्तनकारी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इससे कानूनी विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और शिक्षा जगत सहित अन्य लोगों को 2047 के विजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश के कानूनों की सुधारात्मक जरूरतों पर विचार विमर्श किया गया। पहले तकनीकी सत्र में एक्सीलरेटिंग प्रोग्रेस थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल रोड मैप फॉर जस्टिस एंड डेवलपमेंट पर चर्चा केंद्रित रही। As we know, our constitution was the first to bifurcate social and political rights as justiciable right, part 3 of the constitution. And other non-justiciable rights were included in part 4, economic, cultural and social right. So, these are rights non-justiciable. Why for they are non-justiciable? Because the state must have liberty to implement them without court's interference. And the state has to, every law must be in compliance of the directive principles of the state policy. Moving force behind the laws enacted by the legislature, state or the national level, are the directive principles of the state policy, and once they have found statutory expression, they become enforceable. Otherwise, directive principles are not enforceable. Development is human-centric development. Why for development is there? Let us understand. Basic concept is that it is human-centric, it is for human, it is by human, and receiving end is also that of beneficiary is human. Every development is for the benefit of the human. In the process of the development, we have to develop the human itself. Human cannot be left behind in that process of development or should not suffer. In case there is any adverse impact of the development process, that has to, reparation theory is there. Theory of reparation is restoration. How to restore? That is the precise. And now there are equals rights to be enforced, equality rights to be enforced under Article 14 of the Constitution. And then, you see, equality sought to be achieved under the directive principles of the state policy. Those basically are unequals. Now, ameliorative measures are required to make them equal. That is called distributive justice, need-based justice. Ameliorative measures, supportive measures have to be provided to marginalized class, and by making them, empowering them, they have to be brought up, and that is called exactly their development process. They must participate in the development process. Every development should be human-centric. They should not lag behind.
they should come up in the process of development. These classes should come up in the process of development. That is human-centric development, you see. The approach should be human-centric. Development is not that you are building an infrastructure in the process. Whatever development process is there, humans should come up. They should be benefited. There should not be any adverse impact of any project. वहीं दूसरा तकनीकी सत्र क्लाइमेट चेंज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांस पर आधारित था। जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने कहा कि पर्यावरण पंचतत्व में समाहित है। भारतीय परंपराओं में इसका विशेष महत्व रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इन विचारों की अनदेखी हुई। बेसिक फीचर्स ऑफ द एनवायरनमेंट विच आर रिकॉग्नाइज्ड पर पंच तत्व जिनको हम लोग जानते हैं, लैंड, सॉइल, वाटर, स्काई, स्पेस, एयर एंड अग्नि, फायर. I am not reading as to what has been said in different scriptures, but what I find that what has been said in the old ancient scriptures that was forgotten by us in the last a few hundred years, probably under the impression that the development in material world is more important, and that was due to the reason that we are being reigned by foreign powers, and they have their different notions, and they always think that our ancient scripture is nothing but a foolish paradise. वहीं तीसरा तकनीकी सत्र लॉ, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर आधारित रहा, जिसमें डिजिटल जस्टिस तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। The critical need for equal access to digital justice systems. With increasing digitization, especially of court records, privacy concerns are likely to be at the forefront of judicial and public deliberations in the coming years. It will also require external regulation by the legislature through statutes, rules, regulations, and by the judiciary through judicial review in the context of the constitutional standards. The goals must be to adopt a legal model which observes the principles of authenticity, integrity, confidentiality, and legal validity. The judgment of the Supreme Court in case Puttaswamy has laid down a threefold test to determine whether a legislation violates the right to privacy. Namely, the law must fail the test of legality. For a law to fall foul of the right of privacy, the law must firstly fail the test of legality, that it is not been enacted by a competent legislature. The law must fail the test of need, defined in terms of a legitimate state aim. What is the justification or rationale for such a law? The law must fail the test of proportionality, which ensures a rational nexus between the objects and means adopted to achieve them. Following Puttaswamy by majority, the Supreme Court upheld the validity of the Aadhaar Act and UIDAI regulations while striking down certain provisions as unconstitutional. So we already have the principles laid down in Puttaswamy, followed in the Aadhaar case, to help us while examining any law which may be made for the purpose of implementing these technological transformations and innovations in the field of law. While acknowledging the existing challenges, it's crucial to recognize the immense potential that technology holds in fostering a more equitable, accessible, and efficient legal framework. The integration of technology not only enhances the delivery of justice, but also paves the way for a more inclusive society. With prudent regulation, thoughtful implementation, and a commitment to fundamental principles, the advancement in technology offers a promising path towards a more just and empowered future for all. वहीं चौथा तकनीकी सत्र जेंडर एम्पावरमेंट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम पर आधारित रहा,
जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने की। To achieve gender equality, we need to mainstream gender. As per its ordinary meaning, mainstream connotes ideas and opinions which are considered normal, mainstream. So, the concept of gender equality should be a very normal thing, central to life, and not discussed in occasional colloquiums of this kind and later forgotten. Gender mainstreaming is a concerted effort through legislation, policy decisions, framing of rules, framing of policies in different areas, and also requires addressing the issue of representation of all genders in the area of those policies. वहीं पांचवा और अंतिम तकनीकी सत्र लॉ एंड जस्टिस इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड पर आधारित था। AI powered legal research tools can sift through vast volumes of case law, statutes, and legal documents, thereby enabling lawyers to promptly and effectively extract relevant information. This not only saves time and also enhances the accuracy of legal arguments. I must also add here that there never was, and there never is, and there shall never be a substitute for human intelligence. Artificial intelligence certainly shall aid human intelligence, but human intelligence shall always rule supreme. Here I want to take a little digression, basically for the young men and ladies. Information is not knowledge. Am I surprising you? Information, there's a beautiful poem about it. Information is lost in knowledge. Knowledge is lost in wisdom. You see, when I say wisdom, that won't become a saint. Original thinking. As you grow, you see, your economy, your sense of justice, your sense of understanding law, even in the domestic sphere, international sphere, globalized sphere, requires the reading, the scanning, understanding, and original application. How to apply the subtleties and the nuances of law. आपको बता दें, संविधान सभा ने 1949 में आज ही के दिन संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। सरकार ने वर्ष 2015 से नागरिकों में संविधान के प्रति जागरूकता और मूल्यों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर के दिन मनाने का फैसला किया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और अन्य न्यायाधीश भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय की ओर से आयोजित संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 2015 में जब राष्ट्र ने बाबा साहेब अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई, सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया, जो संविधान के साथ साथ इसके निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करना था। Today we commemorate the day the Constitution was adopted by the Constituent Assembly of India in 1949 after close of 3 years of brainstorming. Earlier,
This day was celebrated as Law Day. In 2015, as the nation celebrated the 125th birth anniversary of the key architect of the Constitution, Dr. Babasaheb Ambedkar, the Government of India declared 26 November as Constitution Day. The twin aims were to help spread awareness about the Constitution as well as about Dr. Ambedkar's crucial contribution to it. Today, we celebrate the values enshrined in this founding document and rededicate ourselves to uphold them in the day-to-day life of the nation. What are these values? They are justice, liberty, equality, and fraternity, which are specially highlighted in the preamble. These are the principles on which we have agreed to conduct ourselves as a nation. These are, of course, the civilizational values of humankind, finding their best expression in the wisdom of this land. During a collective journey from darkness to light over the centuries, people in different parts of the world have rediscovered the same repeatedly. In our case, it was during the great freedom struggle that we came to realize their importance once again. The people from different corners of this vast and diverse country to reach the rich and the poor, men and women, the educated and the uneducated, city dwellers and villagers, followers of different faiths, found a common objective in the liberation of the motherland. I believe involving the young generation in those efforts by making them more knowledgeable of the Constitution, its making and its working will bear excellent fruits in that direction. The youth has become more interested in our history, and if they learn more about the transformative work of visionaries like Babasaheb Ambedkar, the future of the Republic will be in safe hands. संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संविधान दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। मुझे याद है जब साल 2015 में हम बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती मना रहे थे, उसी समय ये विचार आया था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाए, और तब से हर साल आज के इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और हम सब मिल करके नागरिकों के कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए विकसित भारत के संकल्प को जरूर पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन और लंबी चर्चा के बाद हमारे संविधान का ड्राफ्ट तैयार हुआ था। हम सभी जानते हैं कि संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। 60 से ज्यादा देशों के संविधान का अध्ययन और लंबी चर्चा के बाद हमारे संविधान का ड्राफ्ट तैयार हुआ था। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद उसे अंतिम रूप देने से पहले उसमें 2000 से अधिक संशोधन फिर किए गए थे। 1950 में संविधान लागू होने के बाद भी अब तक कुल 106 बार संविधान संशोधन किया जा चुका है। समय, परिस्थिति, देश की आवश्यकता को देखते हुए अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर संशोधन किए, लेकिन ये भी दुर्भाग्य रहा
कि संविधान का पहला संशोधन फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अधिकारों में कटौती करने के लिए हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये भी बहुत प्रेरक है कि संविधान सभा के कुछ सदस्य मनोनीत किए गए थे, उनमें से 15 महिला थीं। संशोधन के माध्यम से इमरजेंसी के दौरान की गई गलतियों को सुधारा गया था। साथियों, ये भी बहुत प्रेरक है कि संविधान सभा के कुछ सदस्य मनोनीत किए गए थे, जिनमें से 15 महिलाएं थी। ऐसी एक सदस्य हंसा मेहता जी ने महिलाओं के अधिकार और न्याय की आवाज बुलंद की थी। उस दौर में भारत उन कुछ देशों में था जहां महिलाओं को संविधान से वोटिंग का अधिकार दिया। राष्ट्र निर्माण में जब सबका साथ होता है, तभी सबका विकास भी हो पाता है। मुझे संतोष है कि संविधान निर्माताओं के उसी दूरदृष्टि का पालन करते हुए अब भारत के संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारे लोकतंत्र की संकल्प शक्ति का उदाहरण है। ये विकसित भारत के हमारे संकल्प को गति देने के लिए भी उतना ही सहायक होगा। संविधान निर्माताओं ने संविधान को लचीला और कारगर बनाया ताकि एक काल विशेष में बनाया गया यह दस्तावेज भविष्य की आवश्यकताओं को समायोजित कर सके। ध्यान दिया गया कि संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन भी संभव हो। ये बातें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक दैनिक अखबार में लिखे लेख में कही हैं। उन्होंने लिखा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। यह एक उत्कृष्ट संविधान को अपनाने की वर्षगांठ का दिन है। ऐसा संविधान जिसकी परिकल्पना भारतीयों ने की और प्रारूप भी भारतीयों ने तैयार किया। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि पिछले 7 दशकों की अनेक चुनौतियों के बावजूद हमारी शासन व्यवस्था संविधान में निहित गणतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप रही है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संविधान के ये मूलभूत सिद्धांत रहे हैं, जिसमें अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। समय के साथ भारत की जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच संविधान की स्वीकार्यता बढ़ी है, तो इसका कारण ये है कि आरंभ से ही जनता ने इसे पूरी तरह से स्वीकार किया है। लोकतांत्रिक संस्थाएं और परंपराएं भारत की समृद्ध विरासत की अभिन्न अंग रही हैं। यहाँ वैदिक काल से ही सार्वजनिक सभाओं और निर्वाचित राजतंत्रों के रूप में लोकतांत्रिक संस्थाओं का अस्तित्व रहा है। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को अंगीकृत करने का प्रस्ताव रखते हुए 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भारत की सहभागी शासन संस्थाओं की समृद्ध विरासत के बारे में अहम बात कही। संविधान सभा की चर्चाओं से प्रदर्शित होता है कि सदस्यों ने कितने उत्साह से सभा की कार्रवाई में भाग लिया और कितने विस्तार से चर्चा की। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने के दौरान 11 सत्रों में 165 बैठकें की। सदस्यों ने प्रारूप संविधान के संबंध में 7,600 से अधिक संशोधन प्रस्तुत किए, जिनमें से लगभग 2,500 संशोधनों पर सभा में चर्चा भी हुई। तो संविधान दिवस के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।